In the Supreme Court of India Civil Appellate Jurisdiction, Civil Appeal number mention ହେଇଛି 22,164 by 2024 Umakant and others another appellant versus state of UP and others ଆଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଥିଲା BR ଗଭାଇ CJI का कोर्ट रे थिला कोर्ट रो बैकग्राउंड कोन रहिଛି ଆମେ ଦେଖିनबा court of debt termination illegal Supreme Court sets aside BSA order dismissing them for lack of qualification ये बैकग्राउंड टी रहिथिला जेतेबेले प्रथमे टी एक्ट आसीथिला 31 मार्च 2015 पर्यंत डेडलाइन दिया जाइथिला ता पूर्वर समस्त योग्यता हासिल करिया पई कहा जाइथिला किंतु 2018 रे जणे योग्यता हासिल करिथिबारु तांको उत्तर प्रदेश सरकार बरखास्त करथिले बा विभाग बरखास्त करथिले जेउथि पई ये केस टी गढी उठिथिला चीफ जस्टिस का कोर्ट राशि पहुंचीथिला Supreme Court of India in a judgment dated October 31, 2025 अर्थात recently has set aside the termination of two assistant teachers from Uttar Pradesh holding that their subsequent acquisition of the teacher eligibility test qualification before the statutory deadline of March 31, 2019 protected their service जेहेतु से क्वालिफिकेशन 31 मार्च 2019 पूर्व हासिल कर सारी से सर्विस प्रोटेक्टेड अच्छी The bench comprising of Chief Justice B.R. Gavai and Justice K. Vinod Chandran quashed the orders of the Allahabad High Court that had upheld their 2018 termination for not possessing the TET certificate at the time of their appointment in 2012. 2012 मसीह से जेहेतु OTT सर्टिफिकेट बा TET सर्टिफिकेट नथिला पोस्टिंग समय रे तांका जज में जोटा बरखास्त टर्मिनेशन को जस्टिफिकेशन करथिले इलाहाबाद हाईकोर्ट ताकू मध्य क्वाश करिसेंती सुप्रीम कोर्ट May 2024 from a division bench of the High Court of Judicature at Allahabad which had dismissed an intra-court appeal. Intra-court appeal को dismiss करथिले division bench Allahabad High Court रो. This in turn had affirmed a learned single judge's order dated March 2024 dismissed the appellant's writ petition को dismiss करथिले. केस रो बैकग्राउंड थिला केस originates from a notification dated August 23, 2010 by NCT section under 23(1) of the Right to Children Free and Compulsory Education Act 2009 mandated passing the TET as a minimum qualification for teachers in class 1 to VIII प्रथम और अष्टम टीचर होगा कहले 23 अगस्त 2010 रे NCT एक रूल आनी जो सेक्शन 23 रे कह जाइथिला जे प्रथम रो अष्टम शिक्षक होगा हेले TET पास करने को बाध्यतामूलक थिला On June 25, 2011 the management of the Jawala Prasad Tiwari Junior High School Kanpur Nagar initiated proceedings to fill up 4 post of assistant teacher charity assistant teacher post पई बाहरी थिला परमिशन नैथिले बेसिक शिक्षा अधिकारी के पाखरु एडवर्टाइज मध्ये इशू होइतला जुलाई 3, 2011 रे with a last application date मध्ये थिला जुलाई 16, 2011 to which the applicant Umakant and another applied एथिरे पार्टी मध्ये अप्लाई करथिले TET examination in Uttar Pradesh was held in November 13, 2011 November 13, 2011 रे first TET उत्तर प्रदेश रे थिला appellant number 2 is cleared the TET on November 25, 2011 November 25, 2011 से OTT बा TET क्लियर करथिले on March 13, 2012 the BSA approved the selection of the appellant to subsequently join their post as assistant teachers on March 17, 2012 appellant number 1 later cleared the TET on May 24, 2014 दो जन appellant रहिचंती एक नंबर appellant 2014 रे क्लियर कले TET appellant 2 2011 ही फास्ट क्लियर करथिले एन अमेंडमेंट टू सेक्शन 23 ऑफ RT एक्ट ऑन अगस्त 9, 2017 प्रोवाइडेड दैट एवरी टीचर्स अपॉइंटेड और इन पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2015 who does not possess minimum qualification shall acquire such minimum qualification within a period of 4 years from the date of the amendment 2017 रे गोटे आसीथिला अमेंडमेंट आपण माने जानि छंती जाहाको नै सुप्रीम कोर्ट मध्ये ऑर्डर दे सारी छंती प्रत्येक टीचर जो माने मार्च 2015 मध्य इन सर्विस टीचर अच्छा मिनिमम क्वालिफिकेशन अक्वायर करा पड़ो और मिनिमम क्वालिफिकेशन मध्य TET बा OTT आसूची जो कहुला 4 इयर्स मध्य अर्थात 31 मार्च 2015 को दि जाइथिला डेडलाइन
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଅନ୍ ଜୁଲାଇ 12 2018 ଦି BSA ଟର୍ମିନେଟେଡ୍ ଦି ଆପିଲାଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ on the ground that they did not possess the TT qualification at the time of their appointment. Authority cause दर्शाइथिले जे सेतेबेले अपॉइंटमेंट पाइथिले सेतेबेले से TT क्वालिफाई करि नथिले सेति पई टर्मिनेट करागला ताको चैलेंज करथिले हाई कोर्ट रे बट द रिट पिटिशन एंड सब्सिक्वेंट स्पेशल अपील वर डिसमिस्ड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा डिसमिस हेतिला अपील गुडी को आर्गुमेंट रे केउ प्रसंग आसीथिला देखंतु Amit Anand Tiwari, learned senior counsel for the appellant, submitted that first TT was conducted only on November 13, 2011. He argued that since the appellants qualified the TT in 2011 and 2014 respectively, they had acquired the qualification within the extended time prescribed by the 2017 amendment to the RT Act should be reinstated. श्री अंकित गोयल मध्य counsel for the respondent state कही the TT appellant were required to have the TT certificate at the time of their appointment. However, the judgment noted that counsel fairly stated to their appointment they obtained TT certificate by 2014. तो शिक्षकों को वकील कही जे डेडलाइन 31 मार्च 2019 पूर्व से माने TT क्वालिफाई करथिले किंतु स्टेट तरफ वकील कही पोस्टिंग समय से पाई नथिले किंतु कोर्ट कही जे 2014 सुधा से सर्टिफिकेट पाई सारी जहाँकि डेडलाइन मध्य थिला द टाइमलाइन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द RT Act इट्स 2017 amendment. Court identified the second proviso subsection 2 of the subsection 23 of the RT Act added by the amendment dated 9 August 2017 9 August 2017 रो amendment को सुप्रीम कोर्ट रा चीफ जस्टिस मध्य वैलिडेशन करथिले एज द क्रुशियल प्रोविजन. This provision allowed to teachers who were appointed or in position as 31st March 2015 and lacked minimum qualification a period of 4 years until March 31, 2019 to acquire them. जो आशा टिकक थिला चीफ जस्टिस कोर्ट रे पड़ो अपील हेबो तो चीफ जस्टिस मते ए केस रे 2017 अमेंडमेंट को सिद्ध कर देइछंती वैध कर देइछंती. Court observed that the appellant were in position as of March 31, 2015 and had acquired the TT qualification by May 2014. May 2014 सुधा से पाइछंती. In paragraph 10 of the judgment states we therefore fail to see as to how the appellant can be said to be unqualified on the date of their termination. जो डेट रे टर्मिनेशन करा जाउछि तांको केमिति अनक्वालिफाई कहा जाय परिबो. 12 जुलाई 2018 अनडिस्प्यूटेडली दे हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड द TT. जेहेतु से डेट सुधा से क्वालिफाई कर सारी TT से अयोग्य बोली कह ना एवं क्रिटिसाइज कर हाईकोर्ट्स रिजनिंग को पैराग्राफ 11 ने पर्टिनेटली बोथ द लर्नड सिंगल जज एंड डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट रिकॉर्डेड दैट अपीलेंट हैड क्वालिफाइड TT by 2014. However, they proceeded on the premise that since the appellant did not possess TT certificate at the time of their appointment, so their termination after working for 6 years did not be interfered with. तेणु से जेहेतु ऑलरेडी क्वालिफिकेशन हासिल कर सारी से टर्मिनेशन करा Supreme Court found this non-interference to be erroneous. It further noted that termination order dated July 12, 2018 cited no other basis for termination apart from the lack of TT qualification at the time of appointment. Court concluded the paragraph 13. The requirement to qualify TT was to be complied with by 31st March 2019, by when the appellants had undisputedly passed the TT. 31 मार्च 2019 पर से रिटेन्स करा युक्तियुक्त थिला किंतु से TT क्वालिफाई करी तेणु से रिटेन्स करवा टर्मिनेशन करवा आईन अनुजाई सम्मत नुहे. चीफ जस्टिस देते 4टी मुख्य पॉइंट. जजमेंट फाइनल ऑर्डर थिला जे कि जो टर्मिनेशन ऑर्डर को क्वाश करा जायतिला एवं जजमेंट को मध्य क्वाश करा जायतिला हाईकोर्ट. रेस्पोंडेंट वर डायरेक्टेड टू फोर्थ रीइंस्टेट द अपीलेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एवं से कह जायतिला जे रीइंस्टेट करबा पाई एवं कोर्ट क्लैरिफाई करथिले व्हाइल अपीलेंट्स वुड नॉट बी एंटाइटल्ड to back wages, they shall be reinstated with continuity of service and all other consequential benefits including seniority etc. किंतु एरियर मिलिबो नाही केवल
तांको मिलिबो कंटिन्यूटी और सीनियरिटी। तो या पर प्रसंग आसूची 31 मार्च 2019 पर जो मैंने टीटी क्वालिफाई करुछंती से बाबद में गोटे वीडियो आम कर सारीचु सेमानंकर सीनियरिटी केबेठू काउंट हेबो। तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर रही। पुणी आसीबा आगामी वीडियो रे। जय जगन्नाथ।